Hello, hi everyone. A very good afternoon to you. This is Neha, your master teacher for economics, and I warmly welcome you all to Vedantu Commerce. How are you guys? Hi everyone. So, economics term 2, class 11th. Today we are going to be like final समापन करने वाले हैं हम supply वाले chapter को. What are we going to do today? We are going to be discussing subjective questions of supply. Right? Very well. So subjective is your forte. Term 2 में आपके सिर्फ subjective answers आने वाले. So that is why we are practicing now more on your subjective type question and answers. Right जी. So welcome guys. Class 11th. ये है आज आपका schedule. Hello. Hi Jyoti. Arfa, we have Nishant here, Sohani here, Priyanka, Mukesh. Hi everyone. Welcome जी. Okay, so if you are new to our channel, क्या करना पड़ता है बेटा? सब्सक्राइब करना पड़ता है एंड अटेंडेंस मार्क करनी पड़ती है नेहा मैम की क्लास में. ठीक है, अटेंडेंस कैसे मार्क होती है? अटेंडेंस मार्क होती है लाइक का बटन दबा के. जल्दी से मार्क करो अटेंडेंस सो दैट सेशंस बिगिन very soon. Oh Priyanka, tomorrow is your exam. All the very best to you. I hope you have studied. Hello Rahul. Hi Nishant. चलिए जी, फॉर योर अपकमिंग नोट्स एज वेल एज सेशंस कौन से होने वाले हैं, वी आर फाइनली बैक. न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है आपका. ठीक है जी, वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ पर वट एवर वी आर टीचिंग फ्रॉम, वट एवर नोट्स वी आर गिविंग यू, दीज पीडीएफ्स दैट यू ऑल वांटेड, राइट. सो वो जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. कहाँ से मिलेगा सब्सक्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन बॉक्स से. डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसा दिखता है बेटा? ऐसा दिखता है. नीचे जहां पे आ रही हैं हमारे वीडियोस, उसमें नीचे शो मोर करोगे, देन दिस इज योर चैनल. ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. ओके जी, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस, गेट रजिस्टर्ड. मतलब रजिस्टर क्या है? टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे सारे नोट्स आ जाने वाले हैं. ठीक है जी. ओके, सो सप्लाई चैप्टर इट इज. अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था मैंने, सॉल्व ही नहीं किया तुम लोगों ने, बना नहीं क्या? क्या हुआ ये? ऐसा क्यों हुआ? चलो अभी सॉल्व करके बताओ मुझे. सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस चेंजेस फ्रॉम 15 to 12 and supply changes from 6 to your 5 units. जल्दी बताओ. फॉर्मूला क्या था हमारा? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस वाज योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. व्हाट इज माय चेंज? Change in price is 3. What is my change in quantity? Change in quantity is 1. So this will be 1 divided by old quantity into price. Old price क्या है? P divided by your change in P. Right? चलो कितना आ रहा है आंसर? हाय फोजिया, सी इज द राइट ऑप्शन बेटा जी. कैलकुलेशन, इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद भी गलत जवाब दे रहे हो यार. ठीक है, सी इज योर राइट ऑप्शन. एंड मुझे कमेंट्स में किसी ने आंसर नहीं दिया था होमवर्क क्वेश्चन में. दिस इज वेरी बैड. होमवर्क देख लिया करो यार, होमवर्क किया करो प्लीज. हाय सिमी. So let's start with your subjective question and answers. Let's start. Oh, दिया है. Then let me see. पता नहीं फिर क्यों नहीं आया बेटा. दिया है देन ओके. अरफा ने दिया है, वेरी गुड. और किस किसने दिया है?
लेट मी सी, न्यूमेरिकल्स कराए थे, फिर ये कराया था. देख के बता रही हूँ किस किसने आंसर दिए थे. वेट करो जी. ओके. ओके, सो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए थे. वी मिस्ड आउट ऑन दैट. वी हैव हर्बला विद द राइट ऑप्शन. ठीक है. वी हैव शाई स्नीकर विद द राइट ऑप्शन. वी हैव आरुषि विद द राइट ऑप्शन. We have Lakshmi, right option. We have Pakhi. We have Nishant Mishra. Okay जी, thank you so much. फालतू में डांट खा लिया ऐसे. ठीक है, थैंक यू सो मच. यस, सबके राइट ऑप्शंस थे. मुझे लगा इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं था कि किसी ने आंसर ही नहीं किया. चलो जी, लेट्स डू. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. Now, explain how technology is determined. Is a determinant of supply of a good by a firm. ठीक है. How your technology is a determinant of supply. Now, आप बताइए, if there is a effect of technological progress on supply of a commodity, what is going to happen? What is your answer? How is technological progress going to affect your supply? If technology increases. ओके बेटा, टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस नहीं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. ठीक है. वी हैव टू बी वेरी वेरी क्या बोलते हैं, टेक्निकल विद आवर वर्ड्स हियर. सो लेट्स सी हमें कैसे आंसर लिखना है. सो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या फिर टेक्निकल इंप्रूवमेंट टेंड्स टू लोअर द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. ठीक है. आप इसकी जगह व्हाट यू कैन गेट, यू कैन राइट कॉस्ट ऑल्सो. ठीक है. सो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट टेंड्स टू लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन because better technology facilitates higher output with the same inputs. Right. Now, accordingly, when your costs have come down, producers are willing to supply more at existing prices. Why? Because their profit margin has increased. Right. Now we are going to give a diagram also for it. This is the diagram. X-axis you are going to put units, Y-axis you are going to put price. SS is your old supply curve, right? And ये S1 is your new supply curve. It is moving rightward, right? It's a rightward progress. ठीक है जी. Price is not going to change. Please see that price is not changing, but still the producers are willing to supply more from Q to Q1. I should think. Question number 2 देखते हैं. Explain how input prices are a determinant of supply of a good by a firm. Input prices. What are inputs? What are inputs, everyone? Can we say cost of production? Can we say raw material? Yes. So these are what? Your raw materials. Very good. है ना? Now, if there is a increase in input price, अगर prices बढ़ जाते हैं, your cost tends to rise. Right? Accordingly, if costs are increasing, your profit is going to come down. If profit margin is going to come down, supply will be less of a commodity at its existing price. Right? So it implies a leftward shift. Please don't write backward, it's leftward. Leftward shift in the supply curve or a decrease in your supply. Okay, so here it is. उल्टा वाला हमारा डायग्राम बनेगा. Got it?
This is when the prices have increased. You can similarly according to the question, ठीक है, अगर 2 मार्क का है तो कोई भी एक केस ले लो और डिस्क्राइब कर लो. If it is of 5 mark, you have to make 2 diagrams and you will have to explain if prices increase या फिर prices decrease. Both the scenarios you will have to write, right? Third question, चलो जी. Firm's revenue is what? Your sales, ठीक है. It rises from 400 to 500 when its price of the product rises from 20 to 25. This is price, this is new price. Okay, please tell me old quantity and new quantity, please. Can you calculate old quantity and new quantity if sales is given to you? हम सेल्स कैसे निकालते थे? हम सेल्स ऐसे निकालते हैं, सेल्स इक्वल्स टू योर क्वांटिटी इनटू प्राइस, राइट? So if your sales is given, if your price is given, we can take out the quantity also, right? So what is my old quantity? 400 divided by 20 will be my Q. It is 20. ठीक है. Now what is my Q1? Q1 will be again 500 divided by 25. This is 20 again. Got it? Now what all you have? You have price as 20, P. You have P1 as 25, that is already given to you. Change in P will be your P1 minus P. That is 25 minus 20. Q is 20, Q1 is also 20, so change in Q is 0. Okay. So यहाँ पर एक 0 आ गया तो हमारी इलास्टिसिटी कितनी आने वाली है? 0. So price elasticity of supply is perfectly inelastic. Perfectly inelastic क्यों? Because even if there is a change in price, we can see a change in price from 20 to 25. The producer should be willing to supply more अगर ये normal होता तो. Got it? But even if the price is increasing from 20 to 25, the quantity is not changing. Quantity supplied is not changing at all. And when your quantity supplied is fixed, you get what? You get a perfectly inelastic curve. How do you draw perfectly inelastic, guys? ऐसा. Even if there is an increase in price, your quantity doesn't tend to change. Quantity is here only. Here, got it? So this is how you have calculated the revenue. Yes, beta, a vertical straight line parallel to your y-axis. Because quantity is not moving at all, right? So quantity supplied, ये आपका revenue था 400 was a old, new revenue was 500, prices were this. So हमने quantity निकाल ली थी. Quantity was 20 here also and 20 here also. So change in price came out to be 5 and change in quantity came out to be 0. And we applied the formula. Question number 4. Chalo. Price elasticity of supply. You are going to calculate it. Chalo ji. You'll calculate it.
Price elasticity of supply of a commodity is 2. A firm supplies 200 units, ठीक है, at a price of 8 per unit. Quantity is 200, price is 8 per unit. At what price? मतलब P1 is नहीं पता. At what price it will supply 250 units? Quantity should become 250. Okay. Hi Rohan. Hi Deepen. Hello Surendra. So this is what? This is my change in Q. Change in Q is coming out to be 50. And change in P nahi pata. Right? So let's see. Here it is. Now, elasticity of supply is change in quantity divided by quantity into price divided by change in price. Okay, we have all the inputs. Change in price nahi hai hamare paas, but we have elasticity of supply as 2. Okay, so change in price came out to be 1. If my old price was 8, at what will be the change? Change in price is my new P1 minus P, right? So change आया है मेरा 1 equals to new is x minus 8, so 9 equals to my P1, price 1. Okay जी, हाँ जी, 9 rupees is the required answer, right? Okay, we have more questions coming up. But before that, let me just explain it to you that we have already started with our crash courses as well as long-term batches on our Vedantu's app. Okay? So if you have doubt, conceptual clarity nahi hai, you want more practice questions or assignments, or you're still lagging behind in your syllabus and looking for a revision plan, look no further, everyone. This is your plan. Choose your plan wisely. Right? So if you apply the coupon code NRPRO, you are going to get a 10% discount. Plus, what is the best? What is best? अगर आपके 15 दिन एग्जाम के लिए बचे तो आप 15 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन ट्राई करो 899 रुपीज में बाय अप्लाइंग द कूपन कोड NRPR, राइट? सो एक बार ट्राई करके देखो, यू विल गेट मतलब you will see the difference that is there for class 11th, and you can make a call for your class 12, right? So live and interactive classes for your test series as well as analysis. We give you assignments and notes, doubt solving during class as well as on mobile app if you want. Our classic subscription is there for you, right? Okay जी, चलिए हाँ जी बेटा, कोर्स तो होने ही वाला है खत्म. मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन ही तो बचा है, हमने सप्लाई तक तो पूरे कर लिया. Question number 5. Let's see. Okay, you tell me, explain any 2 causes, or you don't explain it, you tell me any 2 causes of decrease in supply of a commodity. बताओ. 2 causes, 2 causes. What can be those 2 causes of decrease in supply? अरे वाह मुकेश. Increase in government taxes, increase in input prices. बेटा डिक्रीज इन सप्लाई कैसे हो पाएगा दीपेन? इंक्रीज इन डिमांड से. इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरी गुड. और कोई यही 2 हैं सबके पास. अरे वाह, मैम के पास भी यही है.
प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, नहीं बेटा. Why will producers not want to supply more? उनका मोराल डाउन हो गया था, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ. ठीक है, प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही शर्त पे नहीं प्रोड्यूस करते हैं और नहीं सप्लाई करना चाह रहे हैं, जब तुम उनका प्रॉफिट ले लेते हो. जैसे ही उनका प्रॉफिट तुमने किया कम, they will say, oh, this is not at all profitable, I am not going to produce anymore. Right? So, two causes which decrease the profit of producers: increase in your factor prices, मतलब increase in your factors of production. Land, labor, capital and entrepreneurship, इसमें क्या हो गया, इनका कॉस्ट ही बढ़ गया. Now we know profit is what? Profit is your sales minus cost. So if your cost increases, your profit has to decline. Right? So in this situation, producers will stop producing and start producing some other commodity. ठीक है? Which commodity? Which are more profitable, whose factor inputs are available at a lower price. So as a result, supply of these commodities जिसके input और increase in factor price हो गया है, input prices बढ़ गए हैं, इसकी supply is going to decrease. ठीक है? Next thing is taxation. अगेन, जब आपका प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट में से प्रॉफिट इन हैंड कब आता है? प्रॉफिट इन हैंड आता है आफ्टर द टैक्स इज बीन डिडक्टेड. राइट? इसमें कौन से डिटर्मिनेंट्स यूज करने बेटा? कोई भी दो डिटर्मिनेंट्स ले लो. ठीक है? ओके, सो इंक्रीज इन टैक्सेशन. व्हाट इज टैक्सेशन? आफ्टर द टैक्सेशन whatever is left is your profit in hand, जो आप यूटिलाइज कर सकते हो. बुक्स में तो खूब सारा प्रॉफिट है. अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ही 50% लगा दिया, आज बजट आया, यस आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग द बजट, तो गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिया, फिर क्या होगा? प्रोड्यूसर्स बेचारे फिर से रोना गाना चालू करेंगे, बोलेंगे अरे इतना जीएसटी लग गया, ये लग गया, वो लग गया, हाथ में तो कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं. सो इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया. प्रॉफिट ही है हमारा हर चीज. एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड प्रॉफिट फॉर द सप्लायर. ठीक है? तो इन दिस सप्लायर विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम एल्स कमोडिटी जिस पे टैक्सेस इंपोज नहीं होते हैं, या फिर इतने हाई टैक्सेस नहीं है, या जिस पे सब्सिडी मिलती है. एज अ रिजल्ट, सप्लाई ऑफ दीज कमोडिटीज आर गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स. चलो, हाँ जी बेटा, सबके सब लालची हैं, एंड यहां पर भी सेम लालच दिखने वाला है. हाउ आर यू गोइंग टू राइट? नीरज बेटा, मेंटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम मेंटी नहीं कराएंगे अभी. ठीक है? ओके, एंड अभी चलो इसको हम पहले एनालाइज कर लेते हैं. इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस, ओके, प्राइस क्या हुआ? कम हो गया. किस चीज का प्राइस कम हुआ है? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया. वेरी गुड. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो कॉस्ट भी कम हो गया. कॉस्ट कम हो गया तो प्रॉफिट का क्या हाल होने वाला है? प्रॉफिट बढ़ गया. राइट? इफ कॉस्ट कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया. प्रॉफिट बढ़ गया तो प्रोड्यूसर्स विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर. इंक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई कैसे डिपिक्ट करोगे बेटा? SS, old supply curve. S1, S1, new supply curve. Prices have not changed. Price किसका? Inputs का नहीं. Price of your product has not changed. तो वो यहाँ और यहाँ. So initially quantity supplied was Q. Now the quantity supplied is Q1. We can see even if the price of the product has not increased, the quantity supplied has increased because there is a fall in price of inputs.
Decrease cost of production, increase in profit, more supply, rightward shift. Amazing, वेरी वेरी गुड. ठीक है जी. तो ऐसा आपको एक डायग्राम बना के आना है. और अगर एक दो ही डायग्राम तो यार थोड़ा डिसेंटली बना देना, मेरे ऐसे मत बनाना. यहाँ पर लिख देना ऐसे क्वांटिटी, ऐसे करके प्राइस, सजा देना थोड़ा सा डायग्राम. ठीक है. और स्केल से बनाना, डोंट मेक इट फ्री हैंड. गॉट इट. इसको अब लिखना कैसे है, लेट्स सी दैट ऑल्सो हियर. Now, in case of fall in input price, marginal cost will decline. Accordingly, producers will supply more at existing prices. Existing price दिया हुआ है. It implies a rightward shift in your supply curve or your increase in supply at the same level of price. ठीक है जी. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू इन दिस चैप्टर. तो आपका ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे. एक्सप्लेन इस टाइप का इफेक्ट, फॉल इन प्राइजेस, इंक्रीज इन टैक्सेस. सो यूल हैव टू एनालाइज कि यार ये इससे प्रॉफिट का क्या होगा, प्रॉफिट का क्या होगा. कई बार वो पता क्या कंफ्यूज करेंगे, वो कर देंगे नॉर्मल दे देंगे तुमको, लॉ ऑफ सप्लाई टाइप्स, कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज रिड्यूस्ड. If price of the commodity has reduced, guys, please remember there will not be any rightward leftward shift. You will be moving on that very same supply curve. ठीक है जी. उसी में ऊपर नीचे जाएंगे. एक्सपेंशन बेटा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बुलाएंगे हम उसको. गॉट इट. ऊपर लिखे हुए हैं पॉइंट्स. वेरी गुड. सो ये एक क्वेश्चन हो सकता है. सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा वाला हो सकता है. थर्ड टाइप का क्वेश्चन योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला हो सकता है. कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट. गॉट. सिंपल एज इट कैन गेट. चलिए जी, नेक्स्ट आ गया हमारा फेवरेट वाला क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन भी फेवरेट होता है अगर थ्योरी क्वेश्चन देना है तो. Now, distinguish between change in supply and change in quantity supplied. बताइए. When is change in supply happening? One word. Change in supply is because of, okay, change in quantity supplied हमें मुकेश ने बता दिया कि it is because of change in own price. Very good. And because of other factors, change in supply. This is change in price. Okay. Acha. And when will which of these are going to cause a shift of supply curve? शिफ्ट सप्लाई कर्व में कब होता है? When is shift happening? Shift always and always happens because of other factors, that is change in supply. Very good मुकेश. ठीक है जी. चलो देखते हैं. Now, meaning change in supply when supply of a good changes due to change in other factors, keeping price as constant, and change in quantity supplied is changes in due to own price. Now, what are the factors and reasons? Includes price of related goods, number of firms, then goal of the firm, price of factors of production, state of technology, business confidence, government policy and tax.
Now out of this anything can be given to you and ask कि इसका diagram बनाओ and how is it going to affect the supply. Any of these scenarios can be given to you. ठीक है जी? And change in own price is the only cause out here. Change in supply diagrammatically आपका right word या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है एंड यहां पर इज मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व. दिस इज हाउ वी मूव, राइट. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. डिफाइन मार्केट सप्लाई. What is the effect on the supply of a good when government imposes a tax on production of that good? ठीक है. Now, what is market supply? Market supply is when I add up all the supplies together. जितने भी firms हैं supplying that same commodity, I am going to add up all their supplies and get a market supply curve. ठीक है. Now what is the effect of government imposes a tax? Impose a tax भाई profit हो गया, cost बढ़ गया. Cost से start करेंगे, right? Cost बढ़ गया, profit कम हो गया, profit कम हो गया तो supply is going to be less. ठीक है. Here it is. Yes, taxes increase, government की वो decrease. So quantity of a particular commodity offered for sale by the firm at a given price in the market is known as your market supply. If government imposes taxes, cost of production increase and reduction in profits. Reduction in profit होगा तो producer will shift resources to producing some other commodities which government has not imposed such taxes. और supply क्या हो जाएगा? Commodity का decrease हो जाएगा, right? And you have to give a diagram also. This is a perfect 5-mark question. Got it? You'll have to explain everything out here. Right guys? So I hope you enjoyed this session for the day. आज की पूरी classes आपको समझ में आई कि नहीं आई? Let me know how was your class today? Next class में we are going to be starting forms of market. ठीक है? तो forms of market कब start करने वाले हैं? We are going to continue this on Friday 2 PM sharp. Perfect market condition. Perfect market में जैसे आप perfect competition का बोलते हो बेटा. Perfect competition if we speak about, we can say that agricultural goods के लिए बोलते हैं usually. ठीक है? या अगर तुम्हें सप्लाई का परफेक्ट चाहिए तो सप्लाई का इज योर सप्लाई ऑफ गोल्ड, सप्लाई ऑफ फॉरेक्स. ठीक है, सारा नाम है आपका. ओके, वेरी वेरी नाइस नेम. ठीक है, प्लस योर एप्स, व्हाटएवर यू परचेज ऑन ऐप स्टोर या फिर कोई भी एप्स परचेज करते हो या आप रिचार्ज करते हो. सपोज योर रिचार्ज इज ऑफ 249. सो अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई टू यू अनलिमिटेड. Elasticity of supply here is infinite at only 249 rupees. उससे कम या ज्यादा करोगे तो supplier will not supply this to you. ठीक है, और अगर हम डिमांड की आप बात कर रहे थे तो डिमांड इज, अगर जैसे फॉरेक्स और गोल्ड का रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, सो कंज्यूमर्स कैन डिमांड अनलिमिटेड क्वांटिटीज एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. इफ द सप्लायर वांट्स टू चेंज द प्राइस,
नहीं, आप पेट्रोल भी नहीं भरवाते हो, आप पेट्रोल के भी प्राइसेस आप देख कर जाते हो, ठीक है। अगर कोई पेट्रोल पंप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, यू डोंट गो देयर, राइट। So guys, start your preparations of class 12th early now. You can take your mock test and improve your percentage with Vedantu. यहाँ पर you are going to get thousands of micro courses also free of cost when you register for our batch. So your long-term batch is for 12,999. 15 days is 999, but this is before you apply the coupon code. When you apply the coupon code NRPRO, you are going to get it at 11,699 and 15 days trial at 899. Where is the link to it? हम आपको link दिखा देते हैं. Let me just show it here. In the description box, everyone, यहाँ पर आया. Vedantu courses are now available at discount term 2 full syllabus. You click on it and you reach this page. ठीक है, यहाँ पर already your coupon code is applied NRPRO. That is why it's applicable at 11,699 and 15 days trial for 899 rupees only. Okay, Ji. So go ahead and subscribe for that. Boost your preparations with Vedantu. Artists, congratulations to all our toppers, and your name can also be displayed out here. So जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को if you haven't already. लाइक करना है वीडियो को and share it with all your friends as well. Guys, your notes as well as your session updates are available on Telegram group now. लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का. You can get everything out there as well. ठीक है. See you in the next class, everyone. Thank you so much for watching Vedantu Commerce. Take care and bye bye till then.